Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is angiosperms. In plant kingdom, we will take today angiosperms. Actually, angion is a Greek word which means vessel and sperma means seed. These are the flowering plants. Angiosperms are those seed plants in which seeds are formed inside fruits, and sporophylls are organized into flowers. So these are flowering plants. Angiosperms are flowering plants in which seeds are formed inside the fruits. These angiosperms are the most recently and highly evolved plants. Highly evolved plants. These appeared on Earth about 130 million years ago. Angiosperms are the most conspicuous plants with about 270,000 species, 220,000 dicots and 50,000 monocots. Flowering plants occur in most environments on the earth except sea. These occur on plains as well as in hills. These are also found about 6,000 meters altitude in Himalayan region and also in permanently frozen Antarctica. In deserts, these are also found. Some grow as epiphytes on other plants. Sporophylls are aggregated to form flowers, so angiosperms are called flowering plants. Both microsporophylls and megasporophylls are specialized. A microsporophyll or stamen consists of a filament and an anther. A megasporophyll or carpel is rolled and partly sterilized to produce a stigma, style, and ovary containing ovules. Within ovules are present highly Within ovules are present highly reduced female gametophytes known as embryo sacs. Meiosis takes place before formation of embryo sac. So, all cells of embryo sac are haploid. Then, transfer of these pollen grains from anther to stigma in flowering plants takes place through several agencies, but most prominent among them is by insects because flowers attract insects. Flowers possess nectar as well as smell. Mm, They are showy. They attract insects for nectar. In the meantime, pollination is carried out by these insects. Although there are other means for transfer of pollen grains, for example, air, water, or human beings, but insects are the most prominent agencies that carry out uh, this pollination. Pollen grains or microspores reach on the surface of stigma at the tip of carpel. Female gametophyte or embryo sac develops up to 8 nucleate stage before fertilization. The Before fertilization, this embryo sac or female gametophyte develops up to 8 nucleate stage before fertilization. There is a three-celled egg apparatus, one egg cell or oosphere and two synergids. These constitute egg apparatus. Three antipodal cells
and two polar nuclei which lie in the center. The two polar nuclei fuse to form a diploid secondary nucleus. Archegonia are absent. Instead, there is one ossipair surrounded by two specialized cells called synergids that attract the pollen tube. Pollen tube brings two naked, non-flagellate male gametes. The function of pollen tube is to carry these male gametes. This pollen tube develops when pollen grain lands on stigma, and with the passage of time, this pollen germination takes place and develops a tube at stigma which penetrates through style and reaches the ovary, which carries two male gametes. One of these male gametes fuses with oosphere or egg to form zygote. It is called generative fertilization or syngamy. Generative fertilization or syngamy when one male gamete fuses with egg cell. The second male gamete fuses with diploid secondary nucleus to form triploid primary endosperm nucleus. जो इसमें दूसरा मेल गेमेट होता है वो फ्यूज़ होता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिससे ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है. इसको बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं. इसमें जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है ये इसकी पोलॉइडी होती है 3n होता है. क्रोमोसोम नंबर में इसमें 3n होता है. इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान इसमें 5 न्यूक्लियस होते हैं. जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है. सेंट्रल सेल जो होती है जिसमें ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, वो फिर बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है जो एम्ब्रियो होता है डेवलपिंग स्टेज में, ये एंडोस्पर्म उसी को उस वक्त नॉरिशमेंट देता है. It is for main function of endosperm is to provide nourishment to the developing embryo. Synergids जो होते हैं वो सपोर्टिंग सेल्स या एंटीपोडल्स वो डिजनरेट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. अब जो ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है, जो ये राइपन्ड ओव्यूल्स होते हैं राइपन होते हैं इनटू सीड्स में. ओव्यूल डेवलप होता है सीड में. सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट्स. सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं. फ्रूट इज टेक्निकली ए राइपन्ड ओवरी. Fruit is technically a ripened ovary. Fruits not only protect the seeds but also help in their dispersal. फ्रूट से सीड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है. यहाँ मैंने डायग्रामेटिकली कुछ बनाया है. फॉर एग्जांपल दिस इज स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट इट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स. ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है. मेल फ्लावर्स भी फीमेल भी या दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही में होते हैं. फिर जो मेल पार्ट होता है उसमें एंथर होता है. एंथर का फिलामेंट होता है नीचे, वो इसको एलिवेशन देता है. फिर वहाँ बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. वो फिर रिलीज़ होती हैं, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं. यही माइक्रोस्पोर्स फिर पोलन ग्रेन्स बनाते हैं. ये हैप्लॉइड होते हैं. फिर यहाँ से जो फीमेल पार्ट है इसका है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का. इसमें फिर ओव्यूल डेवलप होता है. जब ये पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा पे तो फिर इन द मीन टाइम वहाँ
پولن ٹیوب ڈیولپ ہوتا ہے. پولن ٹیوب کے ذریعے وہ 2 میل گیمیٹس اووری کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں پولن ٹیوب کی مدد سے. پھر وہاں فیوژن ہوتا ہے اور زائگوٹ وجود میں آتا ہے. جو دوسرا میل گیمیٹ ہوتا ہے وہ اس سیکنڈری نیوکلس کے ساتھ فیوز ہوتا ہے جس کو ٹرپل فیوژن کہتے ہیں. پھر زائگوٹ کی فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایمبریو سٹیج وجود میں آتا ہے. یہ جنریشن ہے اس کو سپوروفائٹک جنریشن کہتے ہیں. اور یہ جنریشن اس کو گیمیٹوفائٹک جنریشن کہتے ہیں. یہ ہے سپوروفائٹک جنریشن. انشاءاللہ کل ہم مارفالوجیکل پورشن اٹھائیں گے. اسی چیپٹر کا دوسرا پارٹ ہے مارفالوجی آف فلاورنگ پلانٹس. کل سے ہم مارفالوجی سٹارٹ کریں گے.